Assalamu alaikum. Welcome to my channel. This is Aisha. Let's begin today's lecture. Today we are going to learn the second algebraic technique, which is rationalization. Although we are going to use the rationalization technique, but the given function is not the rational function because for a function to be rational, we need a polynomial divided by another polynomial. But in this case, the denominator is a polynomial, a linear function, but numerator is not a polynomial because of square root sign. Because of this square root, this the function in the numerator is an irrational function. That's why the whole function is an irrational function, and we need to evaluate the limit of an irrational function. For a rational function, if we have a rational function, we evaluate its limit by factorization technique. But for an irrational function, we use to evaluate its limit by rationalization technique. Now let's begin. As you can see that the variable x approaches to 2. As x approaches to 2 means we need to put x as 2 in the given function. This is square root x and x is 2. So square root 2 minus as it is square root 2 as it is. Whole divided by x is 2 minus n2 as it is minus 2. So square root 2 minus square root 2 is 0 over plus 2 minus 2 is also 0. So we get an indeterminant from 0 by 0, which is not an acceptable answer, and we need to find the correct answer. It's a meaningless form, and for tackling this indeterminate form, we use the technique which is rationalization. Now, rationalization can be in two ways. We can rationalize by numerator, or also we can rationalize by the denominator. It all depends on this given situation. Like in this case, in the given function, you can see the function in the numerator is square root x minus square root 2. It's convenient to rationalize by the square root function. आप देख सकते हैं कि ये स्क्वायर रूट फंक्शन है और जब भी हम रैशनलाइज करते हैं तो हमारे पास ऐसा होता है कि अब जैसे स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी है तो हम इसके कॉन्जुगेट से रैशनलाइज करते हैं. अब ये नंबर है तो इसका if we have a number square root a plus square root b, then its conjugate will be square root a minus square root b. So we have the function in the numerator, this one. इसके कॉन्जुगेट से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट इसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, जस्ट पॉजिटिव साइन हमें यूज़ करना है. बट इन दिस केस आपने डिनोमिनेटर में आपको नज़र आ रहा है, इन गिवन फंक्शन के डिनोमिनेटर में नज़र आ रहा है x माइनस 2. आपने इससे रैशनलाइज नहीं करना, बिकॉज अगर आप इससे रैशनलाइज करेंगे तो आप बेशक चेक, रैशनलाइज मीन्स आपने किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है. और अगर आप इसे चेक करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम ये आपके पास लिमिट एवेलुएट नहीं हो पाएगी और आपको पता चल जाएगा कि हम यहाँ से इससे इस डिनोमिनेटर से रैशनलाइज नहीं कर सकते. बट अगर हमारे पास गिवन फंक्शन ऐसे होता x माइनस 2 बाई स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट 2, अगर फंक्शन हमारे पास गिवन ये वाला होता तो फिर इस केस में हम डिनोमिनेटर से, चूँकि स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में है तो इस केस में हम डिनोमिनेटर से रैशनलाइज कर सकते थे. हमारे पास ये नेगेटिव साइन है, सो वी हैव अ पॉजिटिव साइन स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 2. आपने मस्ट किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है. और आपने ये माइंड में बात ज़रूर रखनी है कि आपने किसी भी सूरत इन दोनों को कैंसिल नहीं करना. अगर आपने इन दोनों को जिस नंबर से अपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, अगर आप इन दोनों को कैंसिल कर देंगे तो फिर मल्टीप्लाई करने का क्या फ़ायदा, फिर तो हमें कोई यूज़फुल ही नहीं है आपने जो मल्टीप्लाई किया. नाउ लेट्स बिगिन. लिमिट x approaches to 2 square root x minus square root 2 by x minus 2. Now multiplying by the conjugate of numerator, so square root x plus square root 2 over square root x plus square root 2. Now we have two fractions. आपने दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में लिखना है, एंड सेम एज द केस विद द डिनोमिनेटर. सो फर्स्ट फंक्शन का जो फर्स्ट आपके पास फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर है स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट 2, और जो हमारे पास सेकंड फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर है स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2
over x minus 2 times square root x plus square root 2. Now limit x approaches to 2, limit x approaches to 2, in the numerator is in the form a plus b times a minus b, which is equals to a square minus b square. मीन्स आपने दोनों नंबर्स को पिक करना है और दोनों नंबर्स को पिक करने के बाद आपने दोनों पे स्क्वायर यूज करना है विद नेगेटिव साइन. So first number is square root x and the second number is square root 2, square of first, square of second, and negative sign in between them. And our denominator is x minus 2 times square root x plus square root 2. So limit x approaches to 2, square and square root will get cancelled. So we have x minus square root 2 square is 2 over x minus 2 times square root x plus square root 2. Now you can see this is x minus 2 and this is also x minus 2, so they will get cancelled. Now we are left with the expression limit x approaches to 2, 1 divided by square root x plus square root 2. Now let's apply the limit and check the final result. चूँकि फैक्टर्स कैंसिल हो चुके हैं और अब पॉसिबली हमारे पास इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं आएगी, और जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो हम ये लिमिट का साइन विद लिमिटिंग वैल्यू यूज़ नहीं करेंगे और हमारे पास 1 एज इट इज़ ओवर स्क्वायर रूट एक्स. एक्स इज अप्रोचिंग टू 2, सो एक्स इज 2, 2 प्लस 2, 2 प्लस स्क्वायर रूट 2. एंड जैसे कि हमारे पास होता है 3 प्लस 3, वी ऑल नो रियली वेल दैट 3 प्लस 3 इज 6. हाउ इज इट 6? आपके पास जो नंबर है वो 3 है और ये 2 टाइम्स ऐड हो रहा है, तो आप 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 3 2 ज़ा 6. तो यहाँ पे 1 ओवर जो नंबर है आपके पास वो है स्क्वायर रूट 2 और वो 2 टाइम्स ऐड हो रहा है, तो 2 स्क्वायर रूट 2. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. नाउ what does it means? It means when x approaches to 2, function will approach to 1 by 2 square root 2. So limit x approaches to, by combining these two, limit x approaches to 2 of the given function is 1 by 2 square root 2. और आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको बता रही हूँ कि आपके माइंड में पॉसिबली क्लिक हुआ हो, आपके माइंड में आ रहा हो कि जब मैं ये कह रही हूँ कि x 2 को अप्रोच कर रहा है तो x 2 के बहुत 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 ज़्यादा क्लोज है. इतना क्लोज है कि अगर आप लिखते हैं 1.99999 जितने मर्जी टाइम्स 9 लिखते हैं, इससे भी ज़्यादा क्लोज है, बट x 2 के इक्वल नहीं. और मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि x 2 के इक्वल भी नहीं है और फिर मैं यहाँ पे x को 2 पुट भी कर रही हूँ, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो जो बात है वो सारी है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो सिंबल्स में हिडन है. और वो सिंबल्स में कैसे हिडन है कि अगर आप देखेंगे जो हमारे पास ये फाइनल एक्सप्रेशन है, जो हमारा आंसर है, अगर आप इसको देखें तो इसमें क्या बताया जा रहा है, किसमें ये बताया जा रहा है कि जब x2 को अप्रोच कर रहा होगा, मींस जब x2 के बहुत बहुत क्लोज होगा, उस टाइम पे जो लिमिटिंग वैल्यू है फंक्शन की वो आपके पास ये होगी, 1/2 स्क्वायर रूट 2 होगी. लिमिटिंग वैल्यू ये होगी या फंक्शन इस वैल्यू को अप्रोच करेगा. सो पता क्या चला कि ना तो x एग्जैक्टली 2 है, पता हमें ये चल रहा है यहाँ से कि ना तो x एग्जैक्टली 2 है और ना फंक्शन का एग्जैक्टली हमारे पास 1/2 स्क्वायर रूट 2 आंसर आ रहा है. क्योंकि जब x एग्जैक्टली 2 होगा तो इस पे तो फंक्शन ये हमारे पास इंडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रही है. जब x एग्जैक्टली 2 है तो ये तो इस फंक्शन की, गिवन फंक्शन की डोमेन में ही नहीं है और इस पे तो फंक्शन कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा हमारे पास. लिहाजा x2 पे तो हमें कुछ भी नहीं पता फंक्शन के बिहेवियर के बारे में, बट जब x2 के बहुत क्लोज होगा तो फंक्शन इस वैल्यू के बहुत क्लोज होगा. ना x एग्जैक्टली 2 है और ना गिवन फंक्शन एग्जैक्टली ये वाली वैल्यू दे रहा आपको. एंड आई थिंक दैट्स इट. Lastly, share my lecture and spread the voice word. Thank you.